unflinching objectivity, she experienced Samyak Darshan and thus succeeded in reaching to the edge of otherwise infinite worldly phase. She was extremely introvert, detached, self-centered and master of penetrative introspection. She was largely instrumental in Pujya Gurudev's instantly appealing propagation of spiritual science on such a wide scale for everyone's enlightenment. In course of her periodical discussions regarding various aspects of dharma, she happened to express her views about Pujya Sogani ji. Nihal Bhai has expressed his intense feelings powered by stony focus on true thyself. Since he did not have any other consideration, his intense feelings have come out. His views tower the ultimate of spirituality. Nihal Bhai's style of expression is hammering, yet he has expressed the operational science in true perspective. How was he? One did not know for lack of close interaction. Since he spoke little, others could not read him. His inner flow and vibes were beyond comprehension. जो शास्त्रों में जो बात आ रही है, वो अपनी आत्मा की अमूर्त बात होने पर भी उनकी वाणी से मूर्त रूप होकर अपने को जागृति मिलती थी। ऐसे कि वो तो जीवंत आगम थे ना, वो बहुत सद्भाग्य से मिला। वो ऐसा लगता है, शास्त्र में आता है कि ज्ञानी आहार के समय अनशन स्वाभाविक को साधते हैं, अनाहारी स्वभाव को साधते हैं। तो लगा कि ऐसा ही उनका ये मूर्तिमंत रूप है। आहार लेने के बाद ऊपर गए અગાસીમાં ગયા, પછી થોડી વાર ચર્ચા કરી। ત્યાં માનસથમ ભગવાન સામે જ દેખાય ને, મંદિરના નજીક છીએ ને, તો માનસથમ ભગવાનના દર્શન કર્યા, પછી ચર્ચા કરી, થોડી વાર ચર્ચા કરી। પછી हमारी दीदी सुशीलाबेन है, उन्होंने बोला कि आपको थोड़ा वॉक करना है, भोजन के बाद थोड़ा वॉक करना है। तो बोले सिद्ध भगवान कहाँ वॉक करने जाते हैं, यहाँ से तो सिद्धों की नगरी दिखती है, यहाँ से तो सिद्ध भगवान निकट दिखते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान की बात करते करते ध्यान में बैठ गए। Due to his growing detachment and intense reclusive nature, he found all worldly affairs, including family responsibilities, a burden. उनकी सबसे अलग बात ये लगती थी कि खाना लग के आता था और वो खाना खाए बगैर कई बार 1-2 ग्रास खाते थे और खाना ख़त्म करके खड़े हो जाते थे। तो हमको हर समय यही लगता था कि इनको शायद खाना पसंद नहीं आया, खाना अच्छा नहीं बना। मेरा और उनका साथ बहुत कम समय का था, पर उस कम समय में भी मुझे ऐसा लगता था कि ये व्यक्तित्व कोई असाधारण है। जनरल लोगों जैसे उनके कोई भी मोमेंट्स लगते नहीं थे। घर के प्रति भी वो बहुत ही उदासीन रहते थे। तो ऐसा लगता था कि ये कोई देव पुरुष है। After returning from Sonkar, he became an introvert and started maintaining bare minimum contact with the family. For his reclusive meditation, he built in the rented house a small temporary cement sheet room with a bath at his own expense. He used to remain confined from 9 at night to 9 in the morning in this said secluded dwelling.
व्यवसायिक कार्यों के कारण कोलकाता में किया निवास। With his limited means, Soganiji could not cope up with the increasing worldly requirements. Therefore, he came to Kolkata in 1950 to explore new business avenues to augment his income. Due to intense application in the new business, need to frequently visit family at Ajmer and being alone at Kolkata, he could not visit Songarh for years together. Despite his keen and earnest desire, his dilemma and internal agony found expression thus. When I was in Songarh, it was my heartiest desire to arrange living accommodation for prolonged stay, to have the benefit of being at Pujya Gurudev's feet. But circumstances are such that I could not even seek his darshan for a number of years. Hardly a day passes without recalling that supremely serene and divine ambience. Even at this moment, Pujya Gurudev is flashing in my mind, and hot tears are flowing out. I have to deprive myself even for a speck of Songarh's dust. Aspirant of complete salvation without any loss of time, Pujya Soganiji had deep hankering for solitude. He writes, I get restless if I don't get time to be with myself. Ultimately, one has to be in solitude forever. So one should start practicing right now, solitude for a few hours every day. Many a times when markets used to remain closed for a couple of days at a stretch, he used to confine himself in his room for days together and used to come out only for essential daily course. पूज्य पिताजी के साथ के जो भी समागम की स्मृतियाँ मेरे मानस में है, वो 1955 से जब मैं कलकत्ता शिक्षा के लिए आया था, तो 1955 से 58 तक पिताजी के साथ अकेले रहने का अवसर मिला था। उस समय वो मेरी किसी भी एक्टिविटीज़ में विशेष इंटरेस्ट नहीं लेते थे, या तो व्यापार में मगन रहते या फिर अकेले रूम में रहा करते थे। मुझे स्पष्ट याद है कि कई बार तो कई छुट्टियों के दौरान 3-3, 4-4 दिन रूम से बाहर नहीं आते थे और मैं ऊब कर किसी रिश्तेदार के घर चला जाया करता था। शिक्षा में हमेशा प्रोत्साहित करते थे, लेकिन बाकी और कोई भी गतिविधि में उनका ख्याल भी नहीं जाता था, न कभी उनकी कोई रोक टोक होती थी। In 1953, he went to Shravanbel Gola with 8 to 10 family members. There, he could somehow manage accommodation of only a small room. Therefore, solitude was not possible there at all. In such a situation, he would go atop the hill after midnight and sit and meditate there. He expressed it thus. Worldly pleasures are like a cobweb. Life in palaces is piercing. Family responsibilities are death-like burden. Worldly considerations are repulsive like saliva. Meeting someone becomes tormenting. Separation from someone causes death-like pain. Family and business matters are such that one has to get involved, even if you don't wish to. Interact with those whom you wish to avoid. Such is the situation. A week before his eldest son's wedding, he wrote in a letter, truly passing through intense pain. There's no joy in it, only regrets. पूज्य सोगानी जी के असाधारण दृष्टिकोण और विशिष्ट मूल्यांकनों का अनुमान इस बात से लग जाएगा कि 1962 में जब मेरी शादी का प्रसंग था, विवाह के लिए जो आमंत्रण पत्रिकाएं कुछ मुमुक्षु बंधुओं को भिजवाई गई, उनमें स्पष्ट तौर से लिखित यह निर्देश था
कि ये पत्रिकाएं केवल व्यवहार निभाने के लिए भेजी जा रही हैं। विवाह जैसे अशुभ प्रसंग पर सद्गुरु के योग में रहे हुए पुण्यशाली साधर्मियों को बुलाना योग्य नहीं है। Ordinarily, it is difficult to believe that Pujya Sogani ji, at the age of only 50, without any means worth the name and with heavy family responsibilities, had made up his mind to get completely detached. आदरणीय बाबूजी के देहांत के समय तक मेरी आयु बहुत कम थी, पर फिर भी जो उनकी एक एक बात याद आती है, तो लास्ट जर्नी जो बॉम्बे से अजमेर की थी, उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर मम्मी के साथ उनके हुए, वो अभी भी मेरे को ऐसे ध्यान में है। आदरणीय बाबूजी ने मम्मी को पूछा कि आप इतने दिन में क्या समझे, तो मम्मी का जवाब था कि मैं तो यही समझी कि अगर थक गए हो तो अपने में बैठ जाओ, नहीं तो 84 का चक्कर चालू है। फिर मम्मी ने ऐसे ही जिज्ञासावश पूछा गुरुदेव के संबंध में कि क्या गुरुदेव के 4 भाई बाकी हैं। तो आदरणीय बाबूजी का जवाब था, 4 भाव तो बहुत होते हैं, एक भाव भी बहुत ज़्यादा है। तो सोच के होता है कि घर में रहते हुए कैसे आदमी इतना बैरागी हो सकता है। Sogani ji was a man of few words and of reclusive nature. For full 13 years, that is, between 1946 and 1959, no one could even sense his extraordinary spiritual achievements within. During his first day in Songarh, he unwittingly came close to a couple of sisters. એને જોઈને જ એટલો બધો ભાવ આવી જતો હતો કે એમ આપણને ખબર પડે કે આ સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ છે. એની વાત ઉપરથી, એની બોલ ઉપરથી, એની હાલ ઉપરથી, કે એ ધ્યાનમાં બેઠા હોય તોય આપણને એમ લાગે કે આ જીવ કોઈ જુદો જ છે. એમ એટલું બધું આપણને એની વ્યક્તિ ઉપરથી જ આપણને આમ એકદમ આપણને ભાવ આવી જતો હતો. અને ગમે એવું હોય તો ખબર પડી જાય કે આ વ્યક્તિ કોઈ અલગ છે. એમ ત્યારે એને રસ બહારમાં નહોતો, અંદરમાં એમ કે હું કેટલો કાળ સુધી ધ્યાનમાં રહીશ તોય મારું ધ્યાન પૂરું નહીં થાય, કે અનંતકાળ સુધી હું ધ્યાનમાં રહીશ તોય મને ટાઈમ ઓછો પડે છે કે. એટલે જ્યારે જુઓ ત્યારે ધ્યાનમાં જ હતા. ગમે એ 12 અવસ્થામાં પુરુષાર્થનો પિંડ ચાલે, પ્રવચન સાંભળવા જાય તોય ચાલ્યા જતા હોય તો આમ પુરુષાર્થ વીર્યવાનથી અને અંદર પોતાનું કામ ચાલુ હોય એવી જ રીતે હતા. और ऐसा ही ऐसा प्रतिबिंब जैसा बैठ जाते थे. हम देखने को जाते थे, જોયું પણ છે. અડગ બિંબ અને પ્રતિમાની જેમ બાજુમાં અમે જોવા ગયા તો એને ખ્યાલ નથી, પણ ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં પૂર્ણ મુદ્રામાં આમ અડગ બિંબ તરીકે બેઠા હતા. અને
આમ આપણને લાગે કે આ સીધ પ્રતિમા જ છે એવો એનો દેખાવ હતો। ऊपर छत में ऊपर बेचता था, 4 बजे उठकर चले जाते थे और 7 वागे नीचे आता था। Whispers of Pujya Sogani ji's spiritual achievements reached Pujya Gurudev as well from time to time. But in the absence of any direct interaction, Pujya Gurudev did not form any impression but remained silent. Of course, during his discourses, whenever he happened to look at Pujya Sogani ji, he would find him in statue-like gazing posture and introverted. Once, in course of discussions in the evening, Pujya Gurudev sought Pujya Sogani ji's views on some very deep and finer philosophical aspects elaborated by him. But Pujya Sogani ji chose to remain silent and bowed with folded hands. जब उसके सुना तो इसको सबसे पहले ये चौंके वहाँ से कि अनंता सिद्ध मैं सिद्ध समान हूँ, वो तो आज तक सुना था, लेकिन मैं सिद्ध से भी अधिक हूँ, ये बात जब सुनी तो चौंके कि सिद्ध से अधिक हूँ, ये बात नहीं सुनी थी। और दूसरी बात वो उसके सामने ये आई कि मैं स्वयं भगवान हूँ, भगवान होना भी क्या, तो उसमें भी चमके कि इतना जोरदार दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो देवगुरु के प्रति इतना भक्ति भाव है, फिर इतनी निश्चय की बात करते थे, फिर भी बोले कि आगम के एक एक शब्द में से आनंद की बूंद बूंद टपकती है। तो लगा कि ओह, इसको शास्त्र के प्रति भी इतना बहुमान है। फिर गुरुदेव के बारे में क्या है उसका अभिप्राय है, तो बोले कि गुरुदेव उपकारी है, इतना नहीं है, गुरुदेव मेरे लिए तो अनंता तीर्थंकर से भी उपकारी है। कि देखो यहाँ सोगानी जी बैठते थे, गुरुदेव न्याल भाई बोलते थे कि न्याल भाई यहाँ बैठते थे प्रवचन में और मानो प्रतिमा है। His fellow believers